हेलो फ्रेंड्स, वाटर एनिमल्स। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। टर्टल, फिश, शार्क, walrus, eel, seahorse, seal, jellyfish, dolphin, whale, octopus, penguin, clam, snail, crab, frog, crocodile,
otter, hippopotamus, farm animals and wild animals, cow, buffalo, sheep, donkey, pig, lion, goat, elephant, yak, monkey, horse, gorilla, tiger, giraffe, cheetah, hippopotamus, deer,
zebra, rhinoceros, camel, kangaroo, bear, wolf, panda, dog, cat, rabbit, mouse, hyena, squirrel, birds, eagle, owl, duck, flamingo, parrot, pigeon, vulture,
hen, hummingbird, crow, sparrow, kingfisher, मैना, peacock, ostrich, woodpecker, quail, हिंदी वर्णमाला अ से अह तक। अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, ई से ईख, ऊ से उल्लू, ऊ से ऊन, री से ऋषि, ए से एड़ी, ऐ से ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत, अम से अंगूर, अह खाली। देखते हैं हमने कितना सीखा। अक्षरों का चित्र से मिलान करें। अ अनार, आ आम, ई इमली, ई ईख, ऊ उल्लू, ऊ ऊन, री ऋषि, ए एड़ी, ऐ ऐनक, ओ ओखली,
औ औरत। अंगूर। अह खाली। क से ज्ञ तक वर्णमाला। क से कबूतर। ख से खरगोश। ग से गमला। घ से घर। ण खाली। च से चम्मच। छ से छतरी। ज से जहाज। झ से झंडा। ण खाली। ट से टमाटर। ठ से ठठेरा। ड से डमरू। ढ से ढक्कन। ण से खाली। त से तरबूज। थ से थर्मस। द से दवात। ध से धनुष। न से नल। प से पतंग। फ से फल। ब से बत्तख। भ से भालू। म से मछली। य से यज्ञ। र से रथ। ल से लट्टू। व से वक। श से शलजम। श से षटकोण। स से सपेरा। ह से हल। छ से क्षत्रिय। त्र से त्रिशूल। ज्ञ से ज्ञानी। आइए देखते हैं हमने कितना सीखा। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क ख ग घ ण च छ ज झ ण। अक्षरों का चित्रों से मिलान कीजिए। ट से टमाटर। न से नल। ल से लट्टू। फ से फल। म से मछली। त से तरबूज। च से चम्मच। भ से भालू। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है 2 अक्षर वाले शब्द। ब स बस। घ र घर।
क प कप, फ ल फल, ह ल हल, न ल नल, ध न धन, ज ग जग, ख ग खग, ग ज गज। दो अक्षरों वाले शब्दों में हमने सीखा बस, घर, हल, जग, फल, नल, खग, कप, धन, गज। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है 3 अक्षरों वाले शब्द। क म ल कमल, म ग र मगर, श ह द शहद, श ह र शहर, म ह ल महल, न म क नमक, म ट र मटर, ब ट न बटन, फ स ल फसल, न य न नयन। 3 अक्षरों वाले शब्दों में हमने सीखा कमल, मगर, शहद, शहर, महल, नमक, मटर, बटन, फसल, नयन। Let's learn alphabet. A for apple, B for ball, C for car, D for duck, E for eagle, F for frog, G for grapes, H for hen, I for ice cream, J for joker, K for kite, L for lion, M for mango, N for nest, O for orange, P for parrot, Q for queen, R for rose, S for sheep, T for telephone, U for umbrella, V for van,
W for watch. X for xylophone. Y for yacht. Z for zebra. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Very good. Next chapter is about vowels and consonants. There are 26 letters in the English alphabet family. Letters A, E, I, O, U are vowels, and the letter except vowels are called consonant. Now let's find vowels in the word pen. Here E is a vowel. Head. Here A is a vowel. Big. Here I is a vowel. Cup. Here U is a vowel. Box. Here O is a vowel. Great job! Use of A and N. You know that 26 letters in English alphabet family. There are 5 vowels and 21 consonants. Use of A. We use A before a word that start with consonant sound. For example, a dog, a book, a goat, a car. Here the word dog, book, goat, car start with consonant sound. That's why we use a before the word. Use of N. We use N before a word that start with vowel sound. For example, an egg, an ant, an owl, an orange. Here the word egg, ant, owl, orange start with vowel sound. That's why we use N before the word. Great job! Use of this, that, this and those. Use of this and that. We use this and that for only one person, animal or object. For example, this is a car. That is a car. This is an aeroplane. That is an aeroplane. Use of these and those. We use these and those for more than one person, animal or object. For example,
These are ice cream. Those are ice cream. These are frogs. Those are frogs. Use of this and these. We use these and these for people, animal, or things near to us. For example, this is a fish. These are fish. This is a duck. These are ducks. That and those. We use that and those for people, animal, or things not near to us. For example, that is a cat. Those are cats. That is a star. Those are stars. Great job! नेक्स्ट टॉपिक है ऑन, इन, अंडर. वेयर इज द कैट? ऑन द टेबल. वेयर इज द कैट? अंडर द टेबल. वेयर इज द कैट? इन द बॉक्स. Where is the apple? On the table. Where is the apple? Under the table. Where is the apple? In the box. Great job! Now it's a time to learn one and many. 1. We make use one when we talk about only one thing. For example, one bug. Many. We make use many when we talk about more than one thing. For example, many bugs. Let's take some more examples. One candy. Many candies. One eraser. Many erasers. One apple. Many apples. Great job! Counting 1 to 100. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54,
55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Backward counting 20 to 1. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. नेक्स्ट चैप्टर है शेप्स। सर्कल, स्क्वायर, ट्राइएंगल, रेक्टेंगल, स्टार। नेक्स्ट चैप्टर है काउंटिंग। काउंट द ऑब्जेक्ट एंड गेस द राइट आंसर। द करेक्ट आंसर इज 1. Correct answer is 6. Correct answer is 4. Correct answer is 9. Correct answer is 8. There are 6 cats and 8 dogs. नेक्स्ट चैप्टर है बिफोर, बिटवीन एंड आफ्टर। जब हमें किसी ऑब्जेक्ट, थिंग या नंबर की पोजीशन बतानी होती है, जब हम बिफोर, बिटवीन एंड आफ्टर का यूज़ करते हैं। बिफोर मीन्स होता है पहले, बिटवीन मीन्स होता है बीच में, एंड आफ्टर मीन्स होता है बाद में। फर्स्ट है बिफोर। बिफोर मीन्स होता है पहले। तो बताइए 6 के पहले कौन सा नंबर होता है? वेरी गुड, 5। नेक्स्ट है 9। 9 के पहले कौन सा नंबर होगा? वेरी गुड, 8। नेक्स्ट है बिटवीन। बिटवीन मीन्स होता है बीच में। तो बताइए 5 और 7 के बीच कौन सा नंबर है? वेरी गुड, 6। 8 और 10 के बीच में कौन सा नंबर है? 9। वेरी गुड। आगे दी हुई एक्सरसाइज में आपको
बिफोर नंबर गेस करना है। फाइंड द बिटवीन नंबर। नाउ फाइंड द आफ्टर नंबर। Next chapter is compare the things. More and less. More candies. Less candies. Light and heavy. Feather is light, but stone is heavy. Front and back. This is the front of the bear, and this is the back of the bear. Next, soft and hard. Sofa is soft, but chair is hard. Next chapter है tables of 2 and 3. Table of 2. 2 ones are 2, 2 twos are 4, 2 threes are 6, 2 fours are 8, 2 fives are 10, 2 sixes are 12, 2 sevens are 14, 2 eights are 16, 2 nines are 18, 2 tens are 20. Table of 3. 3 ones are 3, 3 twos are 6, 3 threes are 9, 3 fours are 12, 3 fives are 15, 3 sixes are 18, 3 sevens are 21, 3 eights are 24, 3 nines are 27, 3 tens are 30. थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।